ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो लाइट फ्लैश लाइट आपको नज़र आ रही है कंपाउंड नहीं हुई, ये वाला एरिया कंपाउंड हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। RX-8 गाड़ी है, ठीक है, और इसमें आया हुआ है पुआर। अब सबसे बड़ी बात यह कि हमको कैसे पता चलेगा हमारी गाड़ी के ऊपर पुआर आया हुआ है। यहाँ पर आपको ये वाइट नज़र आ रहा है। अगर आप गाड़ी के ऊपर इस तरह हाथ मारते हो तो आपको इस तरह फील होगा कि जैसे कोई गाड़ी के ऊपर रिगमाल लगा हुआ है, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी, इस गाड़ी में स्वेल्स काफ़ी ज़्यादा है, स्वेल्स भी रिमूव करेंगे। ये जो पुआर आता है जब आप किसी गाड़ी का पेंट कर रहे होते हैं, जो वो पेंट का वो दूर जो डस्ट गाड़ी के ऊपर फिरता है उसको कहते हैं पुआर, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि आपकी गाड़ी के कलर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रही होती है, ठीक है। ये पेपर मैंने लगाया हुआ है। ये वाला साइड हम कंपाउंड नहीं करेंगे, ये वाला साइड हम कंपाउंड करेंगे। सारा सब कुछ आपको बताएंगे। केमिकल गाइस के साथ मैंने इस वाले कंपाउंड को, ग्लासो इसका नाम है, मैंने इस वाले कंपाउंड को इसके साथ कंपेयर किया हुआ था। केमिकल गाइस का एक प्रोडक्ट आजकल पाकिस्तानी मार्केट में कोई 15,000 से अबव हो चुके हैं, ठीक है। ये वाला ट्यूब कंपाउंड जो है ये ग्लासो, ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में कोई 7,000 के राउंड अबाउट मिल जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैंगरू का एक वैक्स है, ठीक है, हॉट वैक्स भी आप उसको कह सकते हैं। और आज इसके ऊपर पहले ये वाला आइटम अप्लाई करेंगे, ये कंपाउंड है, उसके बाद फिर पॉलिश अप्लाई करेंगे। और आपके पास एक माइक्रोफाइबर का एक टॉवल होना चाहिए जो कि इससे आप अपनी गाड़ी की पॉलिश जो है वो रिमूव कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते पहले मैं आपको इसमें स्वेल्स बताता हूँ कि स्वेल्स आपको कैसे पता चले। अब स्वेल्स की अगर हम बात करें तो ये गोल गोल आपको जो नज़र आ रही है ये स्वेल्स है, ठीक है। इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा स्वेल्स है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्वेल्स है। कंपाउंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपकी गाड़ी के स्वेल्स जो है, जो ये स्वेल्स आपको नज़र आ रही है, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। मशीन से अपनी गाड़ी को कभी भी कंपाउंड ना करें, इससे आपकी गाड़ी की हेल्थ ख़त्म हो जाती है। Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, streets empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
and I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. From town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... सो गाइस ये वाला साइड हमने कंपाउंड कर लिया है। अभी शायद आपको ये नज़र आए कि यहाँ पर ये वाला एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा डिम इसलिए भी है कि यहाँ पर स्वेल्स भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे आपको ये शख्स की आवाज़ सुनिए पुआर है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो पुआर यहाँ पे था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ पर आप स्वेल्स देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक ये स्वेल्स ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्वेल्स अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं गाइस कि इतना ज़्यादा इसमें जो है वो फ़र्क आ चुका है। आप देख सकते हैं वो वाला साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आपको इसमें नज़र आएगी, काफ़ी ज़्यादा शाइन इसमें नज़र आएगी। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये वाला एरिया शाइनिंग, वो वाला काफ़ी ज़्यादा डल डल आपको नज़र आ रहा होगा। तो आई होप आप इसको आपको समझ आ चुकी होगी कि कंपाउंड के फ़ायदे नुकसान क्या है। नुकसान तो खैर कोई भी नहीं, फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो फ्लैश लाइट आपको नज़र आ रही है कंपाउंड नहीं हुई, ये वाला एरिया कंपाउंड हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है इसमें आ चुका है। ये बिल्कुल आपको इस तरह फील होगा कि बिल्कुल लाइट है और ये बिल्कुल डैम है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।